family, assalamu alaikum. Welcome back to my channel. It's me Sadia. If you're new here, so welcome to my channel. So in this video I'm going to show you how to create this purple smoky eye makeup look. It's really easy and simple, and I hope you guys like this video. If you like it, so please give me a big thumbs up, like, subscribe and share this video. Don't forget to turn on the notifications bell so you don't miss my any video. So yeah, let's get start this video now. So here I'm going to make my eyebrows full, and for eyebrows I'm going to use this Miss Rose eyebrows pen. This is a really good and it's not that much expensive. तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज बनाने लगी हूँ, और आईब्रोज के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मिस रोज का ये वाला पेन, जो कि इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और इसका जो लिंक है मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने ये लिया था अली एक्सप्रेस से। और यहाँ पे मैं सफेदी ले रही हूँ, और उसकी हेल्प से जो है मैं इसको सेट कर दूंगी अपनी आईब्रोज को। And now I'm taking this brush and I'm going to fix my eyebrows with this brush. So now here I'm taking this Makeup Revolution foundation stick, and number is F7, and I'm going to apply on my eyelid area to set my eyelid. और यहाँ पे जो है मैं Makeup Revolution की ये फाउंडेशन स्टिक ले रही हूँ और उसको लेके अप्लाई करूंगी अपनी आईलिड एरिया पे, ताकि हमारी जो आईलिड है वो अच्छे से सेट हो जाए। I am going to apply on my under eye area as well. और जो है मैं इसको लेके अपने अंडर आई एरिया पे भी अप्लाई करूंगी साथ साथ। And for a beauty blender, I'm going to take this beauty blender, and this is from a Henry beauty blender, which is a really good. And I'm going to unboxing. This is my first time I'm using this beauty blender. तो यहाँ पे जो है मैं ये ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर रही हूँ, जो कि है हेनरी का, और काफी अच्छा ये ब्यूटी ब्लेंडर है। और इसको जो है मैं आज फर्स्ट टाइम ओपन किया है बॉक्स को, और अब मैं इसको यूज करूंगी। सो हियर आई एम गोइंग टू वेट माय ब्यूटी ब्लेंडर विद दिस मिस्ट स्प्रे। और अब इस ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने गीला कर दिया है इस मिस्ट स्प्रे के साथ। And for a setting powder, I'm going to take this Bake and Bright setting powder, and this is from a Hard and Candy. और setting powder के लिए मैं यूज कर रही हूँ Hard and Candy का Bake and Bright setting powder. I always use this setting powder, guys. It's my all-time favorite and it's good to go. ये जो setting powder है मेरा बहुत फेवरेट है, और ये जो है all the time मेरे साथ ही रहता है, और काफी अच्छा ये जो है चल जाता है। So now I'm going to apply this loose powder on my eyelid area to set my foundation. और इसको लेके मैंने अपने eyelid एरिया के ऊपर अप्लाई करना है, ताकि हमारा जो फाउंडेशन है वो अच्छे से सेट हो जाए eyelid का। And I'm going to apply this loose powder on my under eye area. और ये जो लूज पाउडर है इसको लेके मैं अप्लाई करूंगी अपनी अंडर आई एरिया पर भी। और यहाँ पे जो है मैं ये टेप ले रही हूँ, एंड here I'm going to take this tape and apply on my edges. और यहाँ पे जो है मैं ये टेप ले रही हूँ और इसको मैं अपनी एजेस पे अप्लाई कर लूंगी आईज की साइड को। So here I'm going to take this palette, and this is from Urban Decay, and this is a really beautiful palette. You can see all the shade brights and vibrant colors in this palette. So यहाँ पे जो है मैं ये वाला palette यूज कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं कि इस palette में कितने खूबसूरत शेड हैं। ज्यादातर जो है इसमें ब्राइट शेड हैं, वाइब्रेट कलर्स हैं, बहुत ही खूबसूरत ये पैलेट है। Here I'm going to take this color, and this is a Leo Plus Brickstone color, and I'm going to apply on my brow bone area. और यहाँ पे जो है मैं ये वाला कलर ले रही हूँ, जो कि लियो प्लस ब्रिकस्टोन
का नेम है इस कलर का, एंड मैं जो हूँ इसको लेके अप्लाई करूंगी अपनी ब्रो बोन की एरिया पे। And so here I'm going to take this pencil. This is a kajal pencil. It's kajal pencil and this is in the blue shade. और अब मैं जो हूँ यहाँ पे ये वाली पेंसिल ले रही हूँ जो कि काजल पेंसिल है और ये जो है ब्लू शेड में है। And I'm going to apply on my eyelid area. And now I'm going to fix this color with this brush. और यहाँ पे जो है मैं इस कलर को अच्छे से फिक्स कर दूंगी और यहाँ पे मैं इस ब्रश की हेल्प से इसको फिक्स करना है। So here now I'm going to take this purple color and I'm taking this brush and I'm going to apply on my outer corner area. और यहाँ पे जो है मैं ये वाला शेड ले रही हूँ जो कि पर्पल कलर का है और इस ब्रश की हेल्प से मैं अपने आउटर कॉर्नर के एरिया पे इस शेड को अप्लाई करूंगी। And I'm going to apply with light hand. और इसको जो है मैं अपनी लाइट हैंड की हेल्प से अप्लाई करना है। और लाइट हैंड से हमने इसको क्रीज लाइन की इस साइड की एरिया तक लाना है। एंड विद लाइट हैंड वी आर गोइंग टू अप्लाई ऑन द क्रीज लाइन एरिया। और लिटिल बिट इसको ब्लेंड कर लेना है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट लिटिल बिट। So now moving on the next step, and I'm going to take this light blue eyeshadow and then color name is LCW and I'm going to apply with this flat brush, and this brush is from LUXIE. Sorry, the name of the brush is Lux and LUXIE and I always call LUXIE Lux. I don't know why. मैं ले रही हूँ ये वाला लाइट ब्लू शेड, उसको लेके मैंने अप्लाई करना है अपनी आईलिड एरिया पे। और जो ब्रश है वो मैं ले रही हूँ लक्सी लक्स का। सॉरी, ये जो ब्रश है लक्सी लक्स का नहीं है, इसका नेम है लक्सी। एंड मैं जो हूँ हमेशा इसका नेम जो है लक्सी लक्स ले देती हूँ, आई डोंट नो व्हाई। And now here I'm going to apply on my eyelid area, and this you can see here how beautiful is apply. The color is so pigmented, really vibrant color. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अप्लाई किया है अपने आईलिड एरिया पे। एंड कलर कितना खूबसूरत है, कितना पिगमेंटेड है और कितना वाइब्रेंट ये कलर है। हमने इसको जो है ना पूरा इस यानी कि कॉर्नर साइड की एरिया की तरफ को नहीं लाना है, इनर साइड की साइड को सिर्फ हमने लाइटली सा अप्लाई करना है। ज्यादा हमने इसको इस साइड को नहीं लेकर आना है, इनर कॉर्नर की तरफ को। सो मेकिंग श्योर यू नॉट अप्लाई दिस आई शेडो ऑन योर होल आई एरिया, जस्ट अप्लाई लिटिल बिट फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड एंड जस्ट अप्लाई ओवर हियर एंड डोंट अप्लाई इनर कॉर्नर एरिया, जस्ट लीव इट ओवर हियर लाइक हियर। That's it. And here I'm taking this flat brush and I am apply this color which I apply on my brow bone area. So यहाँ पे जो है मैं ये वाला शेड ले रही हूँ जो कि मैंने अप्लाई किया था अपने brow bone एरिया के ऊपर। Again, I'm going to take the same purple color and I am applying on my outer corner area, crease line.
तो यहाँ पे जो है मैं सेम पर्पल कलर ले रही हूँ और इसको अप्लाई करना है मैंने अपने आउटर कॉर्नर एरिया पे और सेम क्रीज लाइन पे। एंड नाउ आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट वेल, और इसको हमने ब्लेंड कर देना है अच्छे से। Here I'm taking this pencil brush and this is from Elf Cosmetics, and now I'm taking this black color. So यहाँ पे जो है मैं ले रही हूँ Elf Cosmetics का ये पेंसिल ब्रश और मैं यहाँ पे लूंगी ये ब्लैक कलर। And now I'm going to apply on my outer corner area, और इसको लेके हमने outer corner area के ऊपर अप्लाई करना है। So now I'm going to blend it very well, और इसको हमने ब्लेंड कर लेना है अच्छे से। Here I'm taking this brush and this is from LUXIE again, and the number is 121, and I'm taking this beautiful pink color. यहाँ पे जो है मैं ये वाला ब्रश ले रही हूँ जो कि लक्स का है। अगेन मैं लक्स का ब्रश ले रही हूँ। यहाँ पे जो है मैं ये पिंक ब्यूटीफुल कलर ले रही हूँ, and I'm going to apply on my crease line area. ओके गाइस, यहाँ पे जो हो गया मेरा आईज का मेकअप डन एक, और मैं जो हूँ सेकंड आई का भी मेकअप करके आपके सामने। वेलकम बैक गाइस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे दोनों आईज का जो है ना आई मेकअप डन हो चुका है। और अब मैं जो हूँ यहाँ पे आईलाइनर यूज करने लगी हूँ जो कि है लॉरियल का ये जेल आईलाइनर। अभी तक मैंने इसको ओपन नहीं किया है और मैं इसको अब ओपन करने लगी हूँ। इंशाल्लाह इसका मैं जो हूँ रिव्यू आपके साथ बहुत जल्द शेयर कर दूँ। माई बोथ आई मेकअप डन, एंड हियर आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस आईलाइनर, एंड दिस इज अ लॉरियल 24 आवर black gel eyeliner. I'm going to apply on my eyelid area, and I'm going to open this box. Inshallah I will give you a review for this eyeliner very soon in upcoming videos. Take this gel eyeliner, look at here, so cute, beautiful. And यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा सा क्यूट सा ये जेल आईलाइनर है, and it is really creamy. Wow. I'm going to remove my tape so we can apply easily. Here I'm taking this pencil brush and I'm taking this black eyeshadow and apply on my lower lashes. तो यहाँ पे जो है मैं ये पेंसिल ब्रश ले रही हूँ और यहाँ पे जो मैं यूज कर रही हूँ ये ब्लैक आई शेडो, और इसको लेके मैंने अपनी लोअर लैशेस के ऊपर अप्लाई करना है। So here I'm taking this eyelashes and apply on my eyes, और यहाँ पे जो है मैं ये वाली eyelashes ले रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ अपनी आईज पे। For lower lashes I'm going to take this purple shade and I'm using this LUXIE brush, और lower lashes के लिए मैं यूज करूँगी पर्पल कलर और ब्रश यूज कर रही हूँ LUXIE का। I'm going to apply on my lower lashes. And same, I'm applying a silver eyeshadow on my inner corner area. And now I'm using this white pencil and I'm going to apply on my waterline. And so here I'm taking this glitter eyeliner and applying on my eyelid area, like over the crease line. और यहाँ पे जो है मैं ये ले रही हूँ ग्लिटर आईलाइनर जो सिल्वर कलर में है, और इसको लेके मैंने अप्लाई करना है अपने क्रीज लाइन पे। यहाँ पे हो गया है डन मेरा आई मेकअप, और मैं अपने फेस का मेकअप कर देती हूँ स्टार्ट। Guys, my eye makeup is done. I'm going to start my face makeup.
yeah, that's all guys, and I hope you guys like this video. If you like it, so please give me a big thumbs up, like, subscribe and share this video. Don't forget to turn on the notifications bell so you don't miss my any video. I'll see you later on my next video. Till then, Allah Hafiz, bye bye. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. Allah Hafiz.